Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, as part of which in today's session we'll be doing Industrial Relations Overview chapter hai in that part 1. So we'll be doing 15 MCQs, and one of the most important topics when it comes to labor laws उतना ही इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए भी, क्योंकि इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इन द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, बी इट एपीएफसी और ईओ और एओ एग्जाम, दोनों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. Okay, moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO very soon, so I suggest you to go through these sessions regularly so that आपका जो revision है वो भी हो जाए, and then at the same time you will be having lots of practice questions at your disposal, so जो आपके preparation को बिल्कुल एक next level पे लेके जाएगा. So with this introduction, let me start today's session, Industrial Relations Overview Part 1. So moving on to the first question, see industrial relations, until unless एक amicable relation होगा, okay, between the employer and employee and the industry itself, जिस दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ वो काम कर रहा है एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड यू कांट सेपरेट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, बिल्कुल उनको भी अलग नहीं कर सकते, एक ही के अंडर हमें पढ़ना है. सो द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. सो हियर व्हाट इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सी whenever we talk about any industry, majorly that focuses on it includes the economic activity involved, whatever the economic activity that is involved in generating goods and related services, that is called an industry. So in this case, industry का मतलब है that produces goods or related services within an economy. So here B is the correct answer. So moving on to our next question, इसमें एक statement है and based on the statement you have to give me the correct answer. So statement ये बोलता है, in the context of industrial relation, the primary goal of capitalist is to maximize profits. मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स उनको चाहिए. While workers seek job security, fair treatment and favorable working conditions, ये workers का condition रहता है कि हमें ये सब मिलना चाहिए. Now in such case, what or which of the following is a direct consequence of this dynamic? दोनों का गोल तो हमें समझ में आ गया है. So इससे क्या होता है मेजरली, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स ओवर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस. वो सोचते हैं कि कितने कम से कम में वो मैक्सिमम प्रॉफिट अराइव कर सके, और वर्कर्स का रहता है हमें अच्छे वेजेस भी मिले एंड एट द सेम टाइम वर्किंग कंडीशंस. सो बिल्कुल ऑपोजिट में चले तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा. अब इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड लाइन करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए या फिर सही से उनको मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली comes the topic industrial relations. So here in this case C is the correct answer. Now इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है, तो अब क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उनके गोल्स की वजह से, वो तो कॉन्फ्लिक्ट है. नाउ in the second one, industry statement, industrial relations involves in the interaction and negotiations between capitalists, that is employers, and workers, that is employees, in the context of capitalist economic system. Okay, now which of the following is a primary objective of industrial relation? हमने बोला है कि वहाँ conflict हो रहा है, so that's why we have introduced industrial relations, right? So as to resolve those conflicts amicably and वो अच्छे से आगे बढ़ सके, so that whatever the goods and services that they are producing and all that again at the end higher level पे देखा जाए तो that would add value to the economy, right? So in this case, when it comes to the industrial relations, the main objective of that is to balance the interest of capitalist and workers. दोनों को balance ले, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल workers की तरफ है या फिर सिर्फ employees की तरफ है, no. So here A is the correct answer. So moving on to our next question, consider the following statements regarding the need for industrial relations. Which of the below given statements is or are correct? Industrial relations are essential for managing interactions between the labor and management to regulate their relationships effectively. This is very much true. Industrial relations ensure fair labor practices by setting standards for wages, working hours, and employee benefits, thereby preventing exploitation, for which already there are various acts in place जो employers को follow करना पड़ेगा.
The purpose of industrial relations is to provide a framework that balances the interest of both employers and employees in the labor market. Yes, this is also very much true, क्योंकि balance वही तो primary objective है. The primary objective of management in industrial relations is solely maximizing the profits without considering labor welfare. So अगर हमने ऑप्शन स्टेटमेंट 3 को अगर ट्रू बोला है तो दिस वुड बी ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि लेबर वेलफेयर को नजर में रखते हुए दे हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, right? So only 1, 3 and 4 are correct here. So here A is the correct answer when it comes to the need for industrial relations that has to be there. So A is the correct answer. Moving on to our next question. ये क्वेश्चन लिया है मैंने अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनके दो तरह के अप्रोचेस है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक तो मॉडर्न अप्रोच है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में विल बी लुकिंग एट द ट्रेडिशनल अप्रोच. The traditional approach to industrial relations view conflicts between the employers and workers as avoidable and destructive to an organization. Which of the following is a characteristic of the traditional approach? When we talk about traditional approach, कुछ भी ऑलरेडी देखा है हमने कि कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो उसे हम लोग देखते हैं कि वो अवॉइड किया जा सकता है, एंड अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव टू एन ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर दैट दे हैव टू बी अवॉइडेड. इन सच केसेस किस तरह से वो मैनेज करते हैं? सो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच दे focus on the hierarchical power dynamic with the management making the decisions. मतलब ऊपर से नीचे आते हैं decisions ट्रेडिशनल मेथड में. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ भी हो रहा है तो वहां से ऊपर वो देखेंगे, अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सो बेस्ड ऑन दैट दे विल टेक ए डिसीजन कि अगली बार ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो दिस आर द action that needs to be taken. So that would come from the top. So hierarchical power dynamic would be there here in this case. So here C is the correct answer. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले हमने देखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को किस तरह से देखा जाता है, एंड नाउ विल बी लुकिंग एट द मॉडर्न अप्रोच. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मॉडर्न अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस? So it recognizes the role of trade unions and collective bargaining in representing workers' interests. Obviously दोनों की तरफ से वो होना चाहिए. So that they look into. Yes, this is very much true. It encourages workers' participation in decision making at different levels. अदरवाइज ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, ऊपर से हायरार्किकल वाला डिसीजन आता है, यहाँ पे दे आर इन्वॉल्विंग देम. सो ये दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. इट एक्नॉलेजेस वाई वर्क लाइफ बैलेंस एंड एम्प्लॉय वेल बीइंग एज एसेंशियल फैक्टर्स. यस, उसमें भी करते हैं लेकिन उनका मेजरली उनका फोकस रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच में. It differs from the traditional approach by viewing conflicts as inevitable and potentially beneficial to an organization. वहाँ पे क्या है, वो देखते थे कि वो harmful है and कुछ भी होता है तो ऊपर से एक action point आ जाता है. But in this case वो उनको लगता है कि वो inevitable है, ये आने की वजह से they are able to come up with the solution, और आगे ये इससे भी बड़ा conflict हो सकता था, वो avoid किया है. उस तरह के approach से देखते हैं. Yes, this is very much true. It focuses solely on resolving conflicts after they arise rather than preventing them. ऐसा कुछ नहीं, कोशिश करते हैं. Obviously कोई भी organization ये नहीं चाहता कि no they should have conflicts and all that. They try to avoid, but in case अगर कुछ आ रहा है तो definitely they'll try to resolve that by involving everyone here. So this is false. So here 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5. A is the correct answer for this question. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding bipartite industrial relations. Types of industrial relation में bipartite है. Which of the following given statements is correct? Bipartite relations involve direct negotiations and agreements between the employers and workers without third party intervention. So directly वो खुद ही कर लेते हैं जो भी करना है. Okay, so this is very much true. Key aspects of bipartite industrial relations include wages, working hours, workplace conditions, etc. Because obviously those are the things जो common उनका discussion होता है. So this is very much true. Bipartite industrial relations foster a direct relationship between the employers and employees, promoting mutual understanding and conflict resolution. Because ये दोनों ही involved है and दोनों discuss करके कर रहे हैं, तो obviously जो भी वो agreement कर रहे हैं, जो भी वो negotiate कर रहे हैं, that is based on the consent of both the parties. So definitely इस तरह के relations ज़्यादा amicably चलते हैं. So this is very much true.
The government plays an active role in mediating and enforcing agreements in bipartite industrial relations. Obviously जब सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होता है. Here only employees and employees would be there. So obviously क्वेश्चन ही नहीं आता है थर्ड पार्टी का, यहाँ गवर्नमेंट का. So here this is false, वो खुद ही कर लेते. So here 1, 2 and 4 is the correct statement. So A is the correct answer. So moving on to our next question, consider the following statements regarding tripartite industrial relations. Which of the below given statements is or are correct? Tripartite industrial relations involve the government, employees and workers in discussions and decision making process. Obviously third party rahega, in this case it would be the government. Yes, this is very much true. The primary role of the government in tripartite industrial relations is to act as a neutral mediator. वो सिर्फ mediator की तरह काम करेगा. Discussion तो इन दोनों को ही करना पड़ेगा, employers and employees, to ensure fairness and protect the interest for both the employers and workers. This is very much true. Tripartite discussions often influence labor policies, workplace regulations and dispute resolution mechanisms. Obviously ये सब भी रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो लेबर पॉलिसीज भी इसमें आते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू. Unlike bipartite industrial relations, tripartite industrial relations exclude direct negotiations between employers and workers. ऐसा नहीं है, because they are to be involved but with the mediation of the central government. So this is not central government, the appropriate government. So this is false in this case. So here only 1, 2 and 4 are correct. So here D is the correct answer. So moving on to our next question. The directive principles of state policy in the Constitution of India serve as guidelines for the state in creating an industrial relation system that prioritizes which of the following statements. See, when we talk about the industrial relations and the Constitution of India, it plays a really very crucial role, Constitution of India, in shaping the landscape of industrial relations in the country, because they strive on focusing on the fairness, justice and well-being of the workers that they impose here. And the Constitution of India provides basic guidelines for creating the industrial relation system in the country, based on which कुछ fundamental rights है, कुछ directive principles of the state policy है, etc. Okay, वो क्या क्या है, that will be dealing in the coming questions. हम लोग question in the form of questions only will be looking into किस तरह के fundamental rights and all that. So let's, here in this case directive principles of state है, इसमें major हमारा जो prioritization होता है इसमें to have equity, justice and welfare of the workers. Obviously जो हमारा constitution का foundation ही वही है, that is equality for all. So here B is the correct answer. So consider the following statements regarding the role of Constitution of India in shaping industrial relations. Which of the following statements given below are correct? एक बार देख लेते हैं. The Constitution of India provides a foundation for labor policy through fundamental rights and directive principles of state policy. Yes, this is very much true. इन दोनों के जरिए ही वो ये सारे guidelines वो करता है, okay, provide करता है. Articles 12 to 35, the fundamental rights safeguard workers' rights, including the right to form unions and protection against exploitation. Yes, this is very much true. Fundamental rights में अगर देखा जाए तो it is from articles 12 to 35. Different होता है, आगे हम वो देख लेंगे. Articles 36 to 51, directive principles of state policies guide the state in ensuring fair wages, humane working conditions and social justice for laborers. Obviously this is also true. ओके कि स्टेट्स को क्या क्या करना है, किस तरह से करना है. This is true. Article 61 to 71 primarily focuses on labor rights and industrial relations in India. This is not true, because Article 61 to 71 pertains to matters related to President and Vice President, but not the labor relations or industrial labor rights or industrial relations. So here in this case only 1, 2 or 3 are correct. So fundamental rights में articles 12 to 35 and directives principles of state policy में 35 to 51 number articles, they exclusively role है जो play करते हैं when it comes to shaping the industrial relations. So here in this case 1, 2, 3 only are correct. So C is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding constitutional provisions that impact industrial relations in India. Which of the following statements given below is or are correct? So Article 14 ensures equality before the law, preventing discrimination in employment and labor practices. Yes, this is very much true.
Article 15 explicitly prohibits discrimination in workplace based on religion, race, caste, sex, or place of birth. Yes, this is also true. Article 19 grants workers the right to form unions and peacefully assemble, which is crucial for collective bargaining and industrial relations. Yes, this is also very much true. Article 21 has been interpreted to include the right to fair and humane working conditions ensuring dignity or in employment. So राइट टू एवरीथिंग वो आर्टिकल 21 में आता, राइट टू लाइफ एंड ऑल दैट, सो उसमें ये भी इंक्लूडेड. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. सो हियर 1 2 3 4 द करेक्ट स्टेटमेंट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. सो जितने भी अभी हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल्स एंड ऑल दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. डायरेक्टली एक आर्टिकल 15 के ऊपर वो क्वेश्चन दे सकते हैं, या डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे सकते हैं आर्टिकल 21 के ऊपर. ओके, सो ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ आप इन पे अच्छे से फोकस करके कवर कर लीजिएगा. ठीक है. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. Now, next set of articles. Consider the following statements regarding constitutional provisions related to labor rights and industrial relations in India. Which of the following statements given below is or are correct? Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. Okay, ensuring that no individual is subjected to involuntary servitude. This is very much true. Article 24 strictly bans the employment of children below 14 years of age in factories, mines, and hazardous occupations. Yes, this is also very much true. Child labor completely prohibited. Article 38 directs the state to create a social order that promotes social, economic, and political justice, which includes fair labor policies. Yes, इसमें fair labor policies भी आते हैं. This is very much true. Article 39 mandates the state to protect workers' health and strength and prevent the exploitation of children and youth in workplaces. Yes, this is also very much true. So ये सारे भी articles जो statements दे रहे हैं वो सभी true है. So hence here the correct answer is D. As I have said again, time and again, ये सारे articles related to pertaining to this industrial relations etc. very very important. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding constitutional provisions related to labor welfare and industrial relations in India. Which of the following statements given below is or are correct? Article 39A mandates the state to ensure equal justice by providing free legal aid so that no citizen is denied access to justice due to economic constraints. So workers को या कहीं पे कुछ ज़रूरत हो, definitely they have to help, and ये indirectly yes apply करता है. So true. Article 41 guarantees the right to work, education, public assistance in case of unemployment, sickness or disability. Yes, ये भी apply होता है when it comes to the industrial relations. Article 42 directs the state to ensure just and humane working conditions and provide maternity relief to the workers. Yes, this is also true. Article 43 requires the state to ensure living wages and a decent standard of life for all workers, including leisure and social security benefits. वो सब मिलना चाहिए. Yes, this is also true. Article 43A provides for the participation of workers in the management of industrial undertakings to promote industrial democracy. Yes, this is also true. कि बोलते हैं ना कि यूनियन मेंबर्स के जो मेन बोर्ड है that they participate in the managerial action. So yes, this is also true. So here in this case all these statements pertaining to these articles are true. Hence D is the correct answer because 1 2 3 4 5 they are all true. So moving on to our next question, which of the following industries is considered the first modern industry in India? See, जब 19th century में या उससे पहले जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से मॉडर्न इंडस्ट्रीज की तरफ वो बढ़ा था. Now when we talk about India, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था इंडिगो प्लांटेशन से एक्चुअली. ओके, ये हुआ था 1831 में. इंडिगो प्लांटेशंस, you can say that this is the first industry in 1831. आफ्टर दैट आया था कॉटन मिल्स, और कॉटन मिल्स स्टार्ट हुए थे 1851 में. ओके, ये 1831 में हुआ था. आफ्टर दैट ये मुंबई में हुआ था कॉटन मिल्स का. ओके, लेटर जूट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था. जूट मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद स्टार्ट हुआ था 1855 में. ये हुआ था कैलकाटा में, अभी कोलकाता. ठीक है. सो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री अगर हम लोग कहेंगे तो कई बार हमारे दिमाग में सबसे पहला था कॉटन का, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था इंडिगो प्लांटेशन से जो 1831 में हुआ था. उसके बाद 1851 1855 में कॉटन एंड जूट रेस्पेक्टिवली दे हैव फ्लरिश्ड एज पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज.
So moving on to our next question, the statement says the early stages of industrialization in India were characterized by significant power imbalance between the capitalist and labor. क्योंकि capitalist उस time पे they used to consider these workers simply tools of production. Okay, so this led to the exploitation of the workers, which of the following was a consequence of this power imbalance. इसकी वजह से unrest शुरू हुआ, and सबसे important ये this has led to the to lay the foundation for the seeds of trade unionism. So it gave way for emergence of trade unionism and labor unrest as workers organized to protect against such exploitation. And ये सबसे पहले हुआ था वेस्ट बंगाल में हुआ था, जब इंडिगो कल्टिवेटर्स को ऑपरेस करने की कोशिश किए थे, एंड 1860 में हुआ था ये. ओके, सो उसके बाद फॉर्मल यूनियन ऐसे कुछ नहीं किया, बट स्टिल द अनरेस्ट व्हेन वी आर टॉक अबाउट ये हुआ था. एंड आफ्टर दैट नागपुर में हुआ था 1877 में जो अनरेस्ट हुआ था. एंड उसके बाद मुंबई, सूरत, स्लोली 1900s के बाद जब हम लोग आगे बढ़े, देन द यूनियंस एंड ऑल दैट दे केम इनटू प्लेस. अदरवाइज जब अनरेस्ट जब देखेंगे तो दैट हैज स्टार्टेड इन 1860, जो हुआ था इंडिगो प्लांटेशंस में. ओके, दैट लेड टू यूनियनिज्म, मतलब एक यूनिटी में हम लोग रहेंगे तो वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स टाइप का एक माइंडसेट लॉन्च हुआ था. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एमसीक्यूज किया है जो आपके प्रिपरेशन को और भी आगे लेके जा सकता है. नाउ आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छे से करने के लिए EduTap हैज़ लॉन्च 3 मेन कोर्सेज एक्सक्लूसिवली for those who are targeting the upcoming UPSC EPFO APFC and EO और AO examination. ठीक है, वो 3 कोर्सेज क्या क्या है. सबसे पहले आता है आपका मास्टर कोर्स, जिसमें आपको पूरा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा. ठीक है, ये उनके लिए है जो भी अपना प्रिपरेशन अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट की तरह, जहाँ से उनको सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट भी, स्ट्रैटेजी भी, एक्सेट्रा. एंड हियर एवरी वीक कुलदीप सर आपको एक स्ट्रैटेजी देंगे कि इतना कंटेंट है तो उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में, एंड ऑल दैट अलॉन्ग विद इट जो भी आपके डाउट्स है वो रिजॉल्व करेंगे. एवरी थर्सडे क्लास रहता है. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में इनको आइडिया है बिल्कुल और कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं है. तो एक ही अगर उनको सब्जेक्ट चूज करने, लाइक एक्सक्लूसिवली पॉलिटी के लिए उनको बिल्कुल कंटेंट चाहिए, या फिर सिर्फ लेबर लॉस एंड आईआर के लिए चाहिए, इन दैट केस ये उनके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट अलॉन्ग विद दैट फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. तो आपका बिल्कुल फुल प्रूफ वो हो जाएगा. थर्ड आता है आपका कोर्स टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में क्या है, आप ये ऐसे बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार या फिर एक बार एग्जाम देके फिर दे रहे हैं, या फिर उनका बिल्कुल अपने एंड से प्रिपरेशन है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, उन जैसे बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, जहाँ पे आपको गुड नंबर ऑफ MCQs वुड बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट. तो आपको एक रियल एग्जाम का फील भी मिलेगा, एक अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा. So if you have any doubt, कोई query है, you can always reach out to any of the personnel from the EduTap जो available है, and you can get your doubts clarified. Accordingly, you can make an informed decision. So hope you have all liked the session. So thank you very much for being with me so patiently till end, and we'll meet soon in another session very soon. Thank you very much once again.